Good evening, juniors. So, my name is Kartika Mahindrakar, and I'm from Chandrapur, Maharashtra. I'm pursuing my Bachelor of Technology, Mechanical Engineering, and I think not all of us all of us are comfortable in Hindi. So there are some who are only comfortable in English. So I'll be conducting this workshop in English. I hope that none of you has an issue with it. इसका है क्या? Hello. No, ma'am, no issue. Okay. So I sent some practice images before. So see, there are 6 types of hatchings, and mainly only 4 types are most commonly used. Among them, one is parallel hatching, one is contour hatching. So, see, when we draw hatching lines, they should be straight. Usually, means it doesn't necessarily need you to draw with scale, okay? Because we need it to be drawn with freehand. Because if you are trying to draw this with scale, it will take a lot of time just to draw just to draw a single strokes. And after that, if you have to give them effect, like some region needs to be darker than the others, at that time we have to overlap the lines again and again and again. The more you overlap, the darker the region becomes. That is what gives the depth effect. Okay, the lighter shades are where the lines are very less dense, and the darker shades are represented by dense lines. The more you crisscross them, the better effect you will get in the end. Next image, ma'am. And cross hatching. Cross hatching is like the most commonly used one. Fine cross hatching, because the entire thing about hatching is that the lines, like it is the what makes it different from shading is that in shading the color the pencil shades, they look plain, while the beauty of hatching lies in the strokes that are visible. Okay, and basket and woven hatching, and then there is stick hatching. So I hope you have practiced this because I'll be skipping this part. Next image, ma'am. Fine cross hatching. See, in the fourth image, the last image where you see, you will observe that the part where all the 4 strokes are intersecting, that part is the darkest, right? It looks the most prettiest when we are trying to depict depth. Okay, it looks the best. Next image, ma'am. And this is what you were supposed to draw beforehand. Um, See, you have to just hint at things, okay? Because the main drawing that we will be making, it will be with pen, not pencil. So in this part, tree leaves are like we draw hairs. When we draw hairs, we prefer means we suggest not to draw solid and very obvious lines, because you just need to hint on it. Just need to hint that there is something here. So that is the reason I've told you in group that the leaves part, the section where the foliage of the drawing is there, it needs to be only hinted at. Okay, it should not be very obvious. And I suggested that you make the outline of the tree darker than the grids, because obviously when you will erase it, it will balance it out. Okay, Next Kartika, image, can ma'am. you wait for a second? So Yes, sir. someone has raised his hand, I guess, Afzal Khan. So you have any doubt? No, sir, by mistake. Okay. Yeah, Kartika, you can continue. Yes. So now when we start, the things that the main outline of the tree trunk that initially I told you to draw with pencil, now you have to trace it with pen. And do not trace it dark. Okay, keep the pressure on the pen very light and trace it lightly. This is not some sort of very expensive particular hatching pen or something. It's a gel pen. Okay, you can use gel pen, you can use a dot pen, the very commonly used black. Make along with the drawing video. You should have enough time to get it done. Again, I will suggest you not to press it very hard. Okay, keep the pressure very light on the pen. And if you miss something, like if your line goes wrong somewhere, then you do not have to worry a lot about it, because we can handle it later. Everything can be fixed.
And when drawing the tree trunk, try not to make it very continuous. Okay, leave like it should be rough, right? Tree trunk are not smooth; they are rough. So, like, don't make it very continuous. Leave little breaks in between, like especially in the parts where there are corners, right? And in that sections, do not make continuous strokes. I'm not going too fast, right? You can keep up. Hello, juniors. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर कोई पीछे रह जाएगा तो बोल देना, ठीक है? सर अभी ब्लैक जेल पेन तो नहीं है, बॉल पेन से कर लें? हाँ, बॉल पेन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। Any pen goes as long as it's in black, blue, nothing matters. You just need a pen. ओके ओके। और जैसा मैम ने कहा कि कंटिन्यूअस लाइन नहीं बनाना है, तो स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व्स लाइन बनाना का थोड़ा अवॉइड करना। ब्रेक मतलब लाइन को ब्रेक कर करके बनाना है, जिससे वो थोड़ा मतलब टी ट्रंक एकदम स्मूथ तो होता नहीं है, तो वैसा थोड़ा थोड़ा टेक्सचर दिखना चाहिए। यस। Okay, Anam, so after completing this trunk part, na, just wait for 2 minutes so that no one leaves behind. Pause it here, man. Yes. So when you are done with this section, just tell me once. And as the video goes on, I will send the pics on group as well, like how much has been done already. Okay, so there's no need to text done ma'am. Okay, you just wait for a while, and when we'll ask if someone has not completed, he or she will only raise his or her hand. Okay. Path Pandya. No, no, you only have to complete the trunk part, okay? Not the leaves. Excuse me, sir. Yeah. Can you flip the video? It is in sideways. I'm on PC, that's why. Okay, okay, okay. Anam, is it possible that we can flip this?
एक काम करना, यू स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है, एंड ट्राई इट वंस. See, juniors, you do not need to stop right now. Reference images have been sent in the group, so you can continue finishing till then. Those who haven't done. Look, you don't just blindly copy the technique, ठीक है, you just see the technique, and by following the reference which we'll send on the group, you just try to do that, okay. If it is not possible to flip the video. अंशुक Yes, sir. है, तो जो ग्रुप पे इमेज गया उससे अभी दिक्कत नहीं ना है? No, sir. I'm looking at that one only. ठीक. Actually, the problem is that tree is vertically aligned now, okay, and we don't have any option. वैसे अगर ओरिएंटेशन वीडियो का सही नहीं होता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, वो रेफरेंस इमेज हम लोग भेजते रहेंगे. तो केवल यहाँ पे टेक्निक देखो, और अगर थोड़ा बहुत छूट रहा है तो वो रेफरेंस इमेज से मैचअप करने का ट्राई करो, वो काफ़ी रहेगा. And those who haven't erased the grids by now, I'll suggest you erase it before you get your drawing completed, because if you try erasing it later, then the ink might spread, okay? तो जिसने अभी वो इरेज नहीं किया है, तो अगर पूरा ग्रिड इरेज करने में टाइम लग रहा है तो कम से कम ट्री के आसपास का मतलब थोड़ा बहुत एरिया इरेज कर दे, कि बाद में तो वाइट एरिया इरेज हो जाएगा, लेकिन जो ट्री का एरिया होगा वो इरेज नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंक सारा स्मज हो जाएगा और जो तुमने मेहनत की है सारा बेकार हो जाएगा. तो मतलब ट्री के आसपास का एरिया डिलीट कर देना ग्रिड, और आउटलाइन भी लाइट कर देना. ज़्यादा डार्क रहेगा तो उतना अच्छा लगता नहीं है. ठीक है, तो उसको लाइट रखने का ट्राई करना सब.
और जितनों ने अभी आउटलाइन बना के ग्रुप पे डाला है सबका सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और बस उसमें ग्रिड इरेज करके शुरू कर दो आउटलाइन वगैरह करना पेन से, नहीं तो ज़्यादा पीछे रह जाओगे। काफी लोग हैं जिन्होंने ग्रिड इरेज नहीं किया है, ग्रिड इरेज कर लो यार। ओके जूनियर्स, ये बताओ मेरे को कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्या? मतलब अगर फ्लिप्ड इमेज तुम्हें दिख रहा है तो, मतलब वीडियो अगर वैसे दिख रही है तो, या इज इट ओके, मतलब यू ऑल कैन मैनेज? Yes, sir, we can manage. जिसको दिक्कत हो सकता है वो एड्रेस कर दे, हाँ, दिख जाए मेजोरिटी क्या है। because that is the problem na, that artwork is vertically inclined, and we can't do anything. That was the best possible way to record that. तो किसी ने हैंड रेज नहीं किया, मतलब किसी को दिक्कत नहीं है वीडियो के अलाइनमेंट से? नहीं ऋषि रुक नो जा, सर, प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल ट्राई कर रही है। वील वेट फॉर 5 minutes and if it is ओके सर। possible, हाँ। सो ओके जूनियर्स, तब तक तुम लोगों में से कोई अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कुछ भी, मतलब जैसे किसी ने कुछ क्लासेस कर रखा हो या फिर किसी को कुछ आता हो, किसी भी मीडियम, किसी भी मीडियम में। 11th-12th में लोगों के फाइन आर्ट्स होते हैं बोर्ड्स में, कोई कुछ शेयर करना चाहता हो? नो वन? सभी न्यूबी हैं क्या? सर फर्स्ट प्राइमरी से 5th ग्रेड तक मैंने सीखा था, मतलब ड्राइंग वाटर कलर अलग अलग टाइप का, फिर ओके, बंद हो गया था, मतलब शिफ्ट शिफ्ट किए थे इसलिए। अच्छा क्यों भाई, क्लास 6 से जेई की तैयारी में लग गए थे क्या? नहीं, मतलब शिफ्ट किया था एकदम अलग मतलब सिटी से, इसलिए। ओके ओके ओके। और नया जगह था, पता नहीं था क्या कहाँ क्या है। तो वापस कॉलेज आने के बाद वो हाँ। वापस से इच्छा यस जगी सर। क्या? हाँ सर, 11th 12th में थोड़ा बहुत वही एनिमे स्केचिंग करता था और कुछ नहीं। ओके ओके। तो कौन कौन से Sir, मीडियम I तुमने ट्राई have करे? no idea about technicalities in art. I do it with your intuition. So yeah, ओके that's ओके। what I'm going to learn maybe from the club. सो व्हाट काइंड ऑफ मीडियम डू यू यूज? I like right now I'm using oil paints and stuff. ओके, सो यू नो And हाउ टू if, पेंट विद ऑयल पेंट। yeah, I know that. Like I learned by practice. Like, वेरी गुड वेरी I गुड। didn't. सो यू हैव artworks with oil paint, acrylic? Yes, sir. Yes, sir. So I made a recent one which was big enough. So it Okay, took me like about 3 months to paint that. And then wow. I'm on to another big art project now. It's gonna take time to the oil Okay, paint okay. one. 3 months is such a long time, so that artwork must have been at a great level, no? Yes, sir. It was, I would say, at a great level, but I don't Okay, know. okay. Yeah, patience is the key for a good artwork. The how much time you invest, that reflects in your artwork, and that is what we believe at Artfreaks. Okay. And anyone else? Okay, someone has raised a hand.
चले यार, इंग्लिश में बोलना जरूरी नहीं है, तुम हिंदी में भी इंटरेक्ट कर सकते हो. So till 10th I have सर कलर पेंटिंग किया था. ओके. और सर ज़्यादा है ना मैंने क्राफ्ट किया था सर, जैसे है ना न्यूज़पेपर रोलिंग से 3D थिंग्स बनाना. अच्छा, काइंड ऑफ क्विलिंग होता है ना, वो करे हो क्या? यस सर. सर एक क्विलिंग होता है और एक सर न्यूज़पेपर रोलिंग भी होता है सर. न्यूज़पेपर को रोल करके अच्छा अच्छा, मतलब उससे स्टिक्स क्या स्टिक्स बनाते बना हो? सर स्टिक्स बना के, जैसे मैंने पिछले क्राफ्ट में बाईसाइकिल बनाई थी सर. ओके उसको ओके ओके, आई गॉट द न्यूज़ पॉइंट. हाँ, समझ गया मैं. सर स्टिक करके. और सर जैसे और भी 3D मॉडल्स होते हैं सर, वो बनाए थे. और सर क्ले से बनाना सर, हमने क्ले से बनाना सीखा था. जैसे गणेश जी बनाए थे और बहुत सारी चीजें बनाई थी सर. ओके, सो क्या ये मेन स्कूल प्रोजेक्ट था या फिर तुमने अपने इंटरेस्ट से बनाया था? सर ये स्कूल में टीचर्स बनवाते थे सर. मैं आर्ट में था, अच्छा मतलब अच्छा अच्छा. क्लब में था. उधर उधर भी क्लब होते थे मेरे स्कूल में सर. डिफरेंट. बहुत सही भाई. कहाँ से हो तुम? स्कूल्स में क्लब होते हैं? यस सर. सर वैसे तो सर मैं महाराजा सुमेर सिंह पब्लिक स्कूल से था सर, मेरे सिटी में, मतलब मेरे किशनगढ़ ओके ओके सर, इन राजस्थान. ओके. तो तुमने कहा कि तुम कलर्स यूज करते थे. विच टाइप ऑफ कलर्स? पेंसिल कलर्स, ऑयल पेस्टल्स, वाटर कलर्स? सर वाटर कलर्स. सही है सही है. इट्स गुड टू स्टार्ट विथ वाटर कलर्स, क्योंकि वाटर कलर को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है. एंड दैट परफेक्ट वाटर इफेक्ट, इट्स वेरी हार्ड टू ब्रिंग आउट. हेलो. हाँ ना. यस. हाँ, मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, एक बार चेक कर ले. वैसे सही नहीं लगता तो वापस ओके लैंडस्केप ओके. में ही कर हाँ देंगे. हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, ट्राई करो. सनल दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है. हाँ हाँ हाँ. मैं ऑल स्टार्ट गुड. कर रही हूँ, ठीक है. ओके. जूनियर्स तुम ही लोग बता दो, तुम लोग को ये बेटर लग रहा है या पहले वाला बेटर था? ठीक है ये ये बेटर है. प्रीवियस वन क्लियर नहीं. ये बेटर है मैम. दैट्स द प्रॉब्लम ना. ऐसे मतलब काफी कम स्क्रीन साइज यूज होएगा. क्रोम में जूम का ऑप्शन प्रीवियस होता है, वन अगर दिक्कत हो तो जूम कर लेना. हाँ सर ठीक है ये. ठीक है क्या? स्टार्टिंग में यस सर. नहीं दिख रहा था क्योंकि वो पेंसिल से आउटलाइन थी, बाकी वापस फिर पेन से हो जाएगा. अरे तुम लोग जो है ना, गूगल मीट की टैब को जूम कर सकते हो, ठीक है. सो यू कैन जूम इन दैट पार्ट. सर लैपटॉप पे नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है क्या? अरे क्या तुमने एप्लीकेशन से ज्वाइन कर रखा है क्या? वेब से अगर किसी ने ज्वाइन किया है तो वेब से है सर. हाँ, वेब से हो जाता है यार. कंट्रोल प्लस से होता है गेस. विंडोज अगर यूज कर रहे हो तो. यस सर. सर उसके लिए ना अपन को फुल स्क्रीन एग्जिट करनी पड़ेगी और फिर अपना ओके उससे ओके फिर हो ओके. जाएगा सर जूम. हाँ, तो ये ट्राई कर लो अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो. ओके सर, हो गया. और नहीं तो पिन कर लो ना, ठीक है. मतलब पिन कर लो और उसके बाद जूम कर लो. ओके. एंड डोंट टेक टेंशन. ओके, मतलब हर स्टेप पे इमेजेस शेयर हो जाएंगे ग्रुप पे. ओके. सो एज अ रेफरेंस तुम लोग वहां से यूज कर लेना. अभी सिर्फ मैम की टेक्निक देख लो कि वो कैसे हाथ चला रही है, ठीक है. बाकी रेफरेंस के लिए तुम ग्रुप से वो देख सकते हो आर्ट वर्क. तो रिज्यूम कर ले सर. हाँ श्योर श्योर. I hope you all are done already because enough time has already passed. यस मैम. So let's start with the leave sides. Okay. मैम थोड़ा रिज्यूम करना है ना मैम. सॉरी, थोड़ा रिवाइंड करना, थोड़ा सा. लीव्स जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ. ओके. So for the leaves part, your lines should be even lighter than the trunk side part, okay? And even more dotted, like do not make it continuous. Okay, if you make it continuous, when you are making the leaves, it will look block like. It won't give the effect of, singular leaves. It will look block like. You don't want your leaves looking
looking like that, then do not make it continuous. Note that the lines I've made, they're all dotted, okay? Like just hinting that there is something here. That is preferably the way you should do it, okay? Keep your pen very light because later on we can obviously darken the parts we need. और एक और काम करना जूनियर्स कि जब भी पेन यूज कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद उसका टिप पोंछते रहना पेज से, क्योंकि वो वहाँ पे इंक क्लॉट होने लगता है और वो जब भी कहीं यूज करे तो लाइट की जगह पे वो पूरा इंक वहाँ लग जाएगा तो वो स्मज हो जाता है। ठीक है, तो उसको रेगुलर इंटरवल पे पोंछते रहना, तो जिससे क्या है कि वो इवन आते रहेगा जैसा तुमको चाहिए, जैसे लाइट चाहिए डार्क चाहिए, तो उसको रेगुलर पोंछते रहना सारा वो जो पॉइंट है निब है पेन का। Also, before you put your hand on a part that you've drawn, let the ink there dry, or you will place your hand and it will smudge. और एल्स तुम लोग एक एक्स्ट्रा पेपर यूज कर सकते हो, ठीक है? एक पेपर टीयर करके और एक एक्स्ट्रा पेपर यूज कर लो, जहाँ पे कंप्लीट हो गया वहाँ पे पेपर रख लो, एंड देन यू कैन पुट योर हैंड ऑन दैट एंड कंप्लीट द पार्ट्स व्हिच आर लाइक ऑन द अबव पार्ट, आई मीन। और अगर किसी को लग रहा हो कि कितना डार्क है कितना लाइट रखना है तो आर्टवर्क बिगड़े नहीं, इसके लिए एक अलग पेज पे पहले मतलब हैंड प्रेशर चेक कर ले कि कितना लगाने पे लाइट आ रहा है, और जब लगे कि ये बहुत अच्छा मतलब सही लाइट है तो उसके बाद पेज पे करना शुरू करें, तो उससे कि आर्टवर्क बिगड़ेगा नहीं जो बना रहे हो। तो ये भी कर सकते हो। When hatching with pen, the effect all lies on how much pressure you put, okay? Like the more pressure you will put, the darker and the straighter the lines will be. And the lighter pressure you will put, the lighter the lines will turn out. For sections like leaves, it's necessary that you will not put pressure on it and not make them continuous. और अगर किसी को मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है अभी वीडियो में तो रेफरेंस में शेयर किया गया है, उसमें भी जूम करके देख सकते हो। अगर अभी भी किसी का वीडियो काफ़ी छोटा आ रहा है स्क्रीन पे और अगर उसने वेब से ज्वाइन किया है लैपटॉप से, तो तुम लोग चेंज लेआउट मतलब सेटिंग्स वाले जो 3 डॉट्स है ना उसमें जाओ, चेंज लेआउट में जाओ और स्पॉटलाइट में क्लिक कर लो। ओके, 4 ऑप्शंस मिलेगा, ऑटो, टाइल्ड, स्पॉटलाइट एंड साइड बार। तो स्पॉटलाइट में क्लिक कर लोगे तो साइड वाले जितने पैनल्स है ना मीट के पर्सन्स के, वो साइड हो जाएंगे एंड थोड़ा जूम इन हो जाएगा। ओके, तो तुम लोग ये कर सकते हो एंड स्पॉटलाइट करने के बाद फुल स्क्रीन कर लो, देन इट इज एनफ। ओके, मतलब काफी सही दिख रहा है फिर। सर एक कंट्रोल माइनस से बाकी का यूआई छोटा करके भी स्क्रीन हाँ थोड़ी हाँ बड़ी हो रही है। हाँ हाँ, वो भी हो रहा है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो, बट दिस इज द बेस्ट वन। तुम लोग चेंज लेआउट में जाओ, ठीक है, 3 डॉट्स है ना उसमें जाओ, चेंज लेआउट में जाओ और स्पॉटलाइट कर लो, ठीक है, और उसके बाद फुल स्क्रीन कर लो। So, ma'am, pause the video, please. So, are you done with the leaves? Everyone? Juniors? अभी नहीं। यस मैम, आई एम डूइंग। No problem, See, no problem. just make We'll it very wait. rough. Okay. Yeah. So we will wait, but just make it very rough.
Keep it light and keep it just because you don't have to complete. It's not the main drawing right now. The main effect will come when we shade it, when we do the hatching. So for now, you just have to know for yourself that when hatching, in order for you to know where to hatch and where to leave blank spaces, that is the reason we are drawing the dotted lines and all. If you see the reference image, in the trunk part as well, there are dotted lines, okay? And those lines are there to know that which part you have to do hatching and which part you have to leave. The folds, the curves in tree trunks that are represented by dotted lines. Are you seeing the image, the reference image that is sent on group? Yes, sir. So just copy those lines, okay? On the tree trunk, the lines are there. The ones that represent the curves of the trunk, the edges, the contours. Even in the tree leaves, you can means whatever you think that you will want to shade this region or you want to show shadows in this region, mark that region with dotted lines. और जितना भी रेफरेंस इमेज ग्रुप में भेजा जा रहा है तो उसको रेगुलर देखते रहो। उससे क्या होगा कि कहाँ तुम्हारा गलती हो रहा है, फिर कहाँ पे थोड़ा सा छूट रहा है, वो पता चलते रहेगा। यहाँ पे केवल वीडियो में टेक्निक देखो और जैसे मैम कर रही हैं वैसे करते जाओ। ओके, सो अभी भी कोई बच्चा है क्या? सफिशिएंट टाइम है यार। कोई बच्चा है क्या? यू कैन रेज योर हैंड्स, वील वेट। ओके, थोड़ा ट्राई कर लो यार कि ये आउटलाइन वाला पार्ट तुम लोग जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है? बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल थिंग ना, जो मेनली तुम्हें सिखाना है दैट इज हैचिंग, ओके? सो अगर वहाँ टाइम ले रहे हो तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आउटलाइन जल्दी कर दो। हैचिंग में आउटलाइंस में रफ वर्क रहता है, तो अगर रेफरेंस इमेज में कोई देख के ऐसा सोच रहा है कि जहाँ जहाँ उसमें दिया हुआ है एग्जैक्ट वैसा ही बनाएंगे, तो उतना जरूरी नहीं है। केवल डॉटेड होना चाहिए और मतलब कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। अब एग्जैक्ट सेम करने के चक्कर में टाइम लगेगा तो वो तो लगेगा ही। समझो, केवल मतलब टेक्निक समझो कैसे करना है, ठीक? एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है। और ये मतलब आउटलाइन हो जाना चाहिए। सबका हो ही गया होगा आई गेस। यस सर। किसी ने हैंड रेज किया था, हो गया क्या उसका? यस सर, हो गया। ओके, और थोड़ा इंटरेक्टिव बनो यार, ठीक है? माइक ऑन करके और जल्दी जल्दी बोल दो, ठीक है? सो दैट टाइम बचे, ओके? हाँ, सो वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड कार्तिका। Yes, sir. So now the first layer will come. For the first layer, all you have to do is make light straight lines, okay? Parallel hatching in the entire part of the drawing. This will be the first basic layer of the drawing. So it will cover the entire drawing, even the leaves and the tree trunk. The next reference will be sent on group.
If you are looking at the So, reference image, okay, Kartika, continue. if you are looking at the reference image, you can see that I've made the first layer according to the dotted lines that I drew before, okay? The part where I did not draw the dotted lines, I've left them blank. That was the use for the dotted lines. And from the right side, I've taken the light source to be from the right side. So obviously more blank spaces are on the right side, while the darker is on the left side. Also, one point to note is that when you are drawing the lines, start it from the darker end. Like every stroke I'm making, it starts from the left side and ends on the right side. Because I want to keep the left side darker and the right side to be the lighter one. We should do with that with pen, ma'am. That hello. हाँ Yes. बोलो. Should do that with pen. You can continue with pencil, or if you want, you can do that with pen. Okay, actually, ma'am done with pen. That's why I asked. Okay, कार्तिका, तुमने क्या सोचा था? पेंसिल से करवाना है क्या इन लोगों से? सर पेन से ही बोला गया था. पेन से बोला गया था क्या? यस सर. ओके, पेन से आई गेस ये लोग को इरेज करने में प्रॉब्लम होगी ना? यस सर. ठीक है, मतलब यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. ओके, अगर पेन से करना चाहते हो पेन से कर लो, पेंसिल से करना चाहते हो पेंसिल से कर लो, नो प्रॉब्लम. ओके, Okay, sir. दैट इज नॉट एन इशू कि तुम क्या यूज कर रहे हो. ठीक है, द टेक्निक इज द इशू कि तुम टेक्निक सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो. ठीक है, ओके. Sorry, I got disconnected. No problem, no problem. Tell me where I They were was. asking that they have to do this with pen or they can use pencil. Yes, they can use pencil. Yeah. That's what I said. Okay, and pause for a while. Let them complete the first layer. Again, note that the lines that you draw in the tree trunk are darker than the ones you draw in the leaf part. Leaf lines, even the basic layer is lighter than the basic layer of the trunk. And you don't need various types of pens, okay, for light and dark effects. The pressure you put on it is all you need to pay attention to. It's not necessarily, you don't need specific pens for this effect. And if someone is using that graphite pencil set, so you can differentiate between the leaves and the trunk part by using two different pencils. Okay, like you can use 2B or 4B pencils to hatch the leaves part, and 4B or 6B pencil to hatch the trunk part. Okay.
और अगर किसी के पास 4B 6B नहीं है तो वो HB से भी कर सकता है। लाइक अभी जो मतलब पैरेलल हैचिंग था उसको केवल लाइट रखे और आगे जो होने वाला है उसको डार्क रखे थोड़ा, तो वो भी काम करेगा। ओके, हम प्ले करते थोड़ा आगे तक। द रेफरेंस पार्ट आल्सो कंटेन द लीव्स पार्ट। No, I think, ma'am, you should pause it right now because in this one I made the leaf part later on. In this, the second layer directly starts actually. Okay. So when you are done with the first layer, junior, just tell me. Ma'am, done. You can move on. Ma'am, wait a minute. First layer done, ma'am. Those who have done their first layer, you can share your images in the group. So Yes, we and can don't process try to for the edits. don't make the lines very close by. Okay, leave some spaces between them because the closer you draw them, the darker it will be. If you draw it way too close right now, then when you cover it up with different lines later, it will merge and become one black expanse, and the lines won't be visible anymore. So let them be sparse. Let there be spaces in between. You don't need to make it very finely just at the beginning. This is just the first layer. Ujjwal Kumbhakar, did you get the point? What just ma'am said? Hello? उज्जवल, Yes, sir. Sir, network problem, sir. ओके। Okay. तो So you फिर got the point what ma'am said. And what is the difference between your artwork and the reference image? Okay, who's this? Ashutosh Chaudhary. Well done, bro. Nikhil. So don't give the shades like तुमने क्या किया है कि जो तुमने strokes दिए है ना, ठीक है, that is fully horizontal. Okay, so try to sketch like in a inclined way, like 30 degree, 45 degrees, 60 degrees. Don't मतलब avoid करो कि full vertical and full horizontal lines बनाना. Okay, that will not look good. Okay, sir. तुमने हैचिंग ठीक करा है बट सिर्फ इंक्लिनेशन, ठीक है, जो तुम स्ट्रोक्स यूज कर रहे हो पेन के। Survi, go in your drawing. Your drawing, it looks two separate parts. Like the middle part, white strip, it continues down from up to top to bottom. Try not to do that. Draw somewhere in between. Like don't make it continuously. It will look weird later on. Okay, ma'am. Same for you, Dave. Okay, ma'am. Sir, how can I correct now this my drawing? So I have not inclined much more. I No have done problem, no problem, horizontal no hedging. problem. You don't have to correct, you just got our point ना। Yes, sir, I got. But या what if my drawing is looking weird नहीं, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना, afterwards? इट्स टू लेट। ओके, सो कोई बात नहीं, ठीक है। तुम लीव्स वाले पार्ट में वैसे नहीं करना, ठीक है, फुल हॉरिजॉन्टल या फुल वर्टिकल।
you do that part good. Okay, leaves वाले part में तुम try करना कि अच्छे से बनाओ. Okay, sir. See, at this stage, you can fix anything that goes wrong. At this stage, anything can be fixed. Whatever goes wrong can be fixed. What I was telling you is that next time when you make the next layer, at that time, try not to make it like two sides. Don't leave any continuous spaces. You have to make it in between as well, because when you see any real life things like a tree trunk, it's not, there is nothing specifically continuous. There are in between edges, in between curves, dips. Yes, ma'am. और जैसा आउटलाइन में बोले थे हम लोग कि कंटिन्यूअस लाइन नहीं रखना है, तो थोड़ा सा उसमें गैप रखना है जिससे ब्रेक टाइप लगे, लेकिन कुछ में है तो अब क्या है, अब मतलब हो गया। देखो अब जैसे पेन से कर रहे हैं तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन उसको आगे सुधारा जा सकता है। तो अब बस अब जो हो गया, लेकिन आगे का जो स्टेप्स है उस पर थोड़ा ध्यान से करोगे तो आगे सुधर सकता है। तो आगे वाले स्टेप्स पे थोड़ा ध्यान देना कि कैसे मैम कर रही हैं, ठीक। और रेफरेंस इमेज पे भी थोड़ा सा ध्यान से देखना कि कितना गैप रखा है, ज़्यादा गैप है कि कम गैप है, हम कितना गैप रख रहे हैं वगैरह, ये सब चीज़। Priyanshu, you're doing good, but try making it lighter. If you make Okay, so ma'am. dark, then when you try to show shadows now, it won't be visible. Everything will become one single shade of black. Oh yes, ma'am. When you said that, I had already did it, so that is Okay, why. okay. और हैचिंग में जब भी लाइन्स बना रहे हैं तो ट्राई करो कि एक लाइन के बाद पेन उठा के दूसरा लाइन शुरू करें। मतलब कंटिन्यूअस रहेगा तो वो लूप जैसा रहेगा और वो अच्छा नहीं लगता है। और एक मतलब क्लीन लाइन्स रहेंगे ना तो वो देखने में अच्छा लगता है और उसमें थोड़ा-सा फेडिंग इफेक्ट भी रहता है। तो कभी भी ट्राई करना एक लाइन करने के बाद दोबारा उठा के लेफ्ट साइड से शुरू करने का, डार्कर एरिया से। सेकंड ईयर जो भी एडमिन है इसको ऐड कर दो यार ग्रुप पे। Vaishnavi, in your artwork, the lines are too fine. Leave some spaces between them. It would look very nice if you leave some spaces between them. They're very light and it looks very nice as a first layer. But I would suggest you leave some more spaces between them. Are you here? You can reply with yes or no, or you can raise your hand. We want a response if ma'am is asking something. Okay, so कोई अभी भी छूट रहा है क्या? Or can we move forward? With the One second, Yes, please. sir. Move on. Sir, one second, please. Okay. Juniors are not getting bored, right? No, ma'am. Hello? No, ma'am. वैभवी है ना मीट में? Yes, sir. तो जब भी तुम लाइन बना रही हो स्ट्रोक्स, तो ऐसा रखो कि जहाँ से शुरू कर रही हो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है और लास्ट तक वो कम होता जाए।
ठीक है, और जैसा तुमने बनाया उसमें क्या है, तुमने लाइंस खींचा है जैसे इक्वल प्रेशर से शुरू से अंत तक, तो उसमें जो फेडिंग इफेक्ट्स आते हैं वो नहीं आ रहा है। तो ट्राई करो कि शुरू में स्ट्रोक में प्रेशर है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो। समझ में आ Yes. रहा है? Yes. Yes, that is the reason that it was told for you to start from the darker side and end the stroke on the lighter side. Because when we put the pen down, at that point it becomes darker, and when we lift the pen, it becomes lighter automatically, right? That was the reason. और यही जिसका भी इशू है कि इक्वल मतलब शुरू से अंत तक लग रहा है डार्कनेस, तो यही करना है कि लाइंस नहीं बनाने हैं, स्ट्रोक्स मारने हैं। तो स्ट्रोक्स में क्या है कि शुरू में प्रेशर ज़्यादा रहेगा और लास्ट तक वो कम होता जाएगा, तो वो फेडिंग इफेक्ट आता है। समझे? मतलब लाइंस मतलब स्ट्रेट रहेगा लेकिन वो स्ट्रोक्स है, ठीक है, लाइंस नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस है और यही करना है, और उससे इफेक्ट्स अच्छे आते हैं। और लाइंस में उतने अच्छे आएंगे नहीं, लाइंस लगेगा कि ब्लॉक टाइप है और उसमें कर्व्स लगेंगे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। Also, as shown in the reference figure, make the layers for the tree, that leaf part as well. Those who are already done with the trunk part, make the first layer for the leaf parts as well. और अगर किसी ने कंप्लीट कर लिया है तो रेफरेंस इमेज देख के आगे का ना बनाए, मैम के साथ साथ चले, तो टेक्निक क्या है वो पता चलेगा। अभी खुद से करोगे तो थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, फिर खराब हो सकता है। तो अगर बन गया है तो थोड़ा रुक जाओ, मैम जब दोबारा मतलब रिज्यूम करेंगी तो वहां से शुरू करना, ठीक है। तब अभी से कोई क्रॉस लगाने लग रहा है तो वो सब बाद बाद में तुम बोलोगे फिर ये दिक्कत हो रहा है सर, सुधारे कैसे। तो अभी थोड़ा रुक जाओ, आगे मैम बताएंगी, उसके हिसाब से करना। रेफरेंस इमेज दिया गया कि ऐसा तुम लोग का आउटपुट आना चाहिए, ये नहीं कि उसको देख के शुरू हो जाओ। मैम बता रही है, उसके साथ चलते रहो, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रख लो यार, ठीक है, मतलब इस लेयर पे तुम आगे चल रहे हो, अगले लेयर पे तुम पीछे हो सकते हो, थोड़ा पेशेंस रख लो, ठीक है, सो दैट वी कैन सिंग। काफी लोग हैं मीट में, दैट्स व्हाई। ओके, सो आई गेस कार्तिका वी शुड स्टार्ट। Okay. Now the second layer. Second layer is means in this also you don't need to make dark lines. Just the crossing of two lines will automatically give the effect of depth. Just this time, what you have to keep in mind is to give it a different tilt. Do not keep it the same at the same angle like the previous lines. You can just make it entirely different direction, cross or something, but and then just overlap them. Like cross hatching. In cross hatching, what we do is that one line and the other line, well, one strokes and the other strokes, they do not have the same angle. They are not at the same angle. Like if one goes from left to right, the other will go from right to left. In that way, they will cross together. Ma'am, you are also darkening the boundary of the tree. सर ये वाला जो लेयर हो रहा है उसका आप रेफरेंस इमेज भेज सकते हैं? या श्योर कार्तिका। Yes, yes. हाँ, तो सर ये लीव्स को बाद में करना है, हमें पहले डबल करना है उसको? नहीं, लीफ में फर्स्ट लेयर डाल दो, फर्स्ट लेयर डाल दो, क्योंकि like whoever is free enough, they can just put it right now. It's just the first layer, but just keep in mind when you're drawing in leaves, it should be lighter than what you drew in trunk. Okay, ma'am.
और जिसने पूछा था कि बाउंड्री पे डार्क हो रहे हैं, तो बाउंड्री पे जब क्रॉस करोगे तो थोड़ा सा पूरे ब्लैक की, ठीक है, व्हाइट स्पेस मतलब डार्क है लेकिन वो पूरा ब्लैक नहीं हुआ है, समझ रहे हो? Okay, sir. And in this second layer, if you see the reference image, you can see that this time I'm not covering the entire trunk. This time, when I'm drawing the second layer, I'm only keeping it even, there are some regions where I left the first layer only visible. I did not cross it all over the first layer. This is where the initial dotted lines will come in handy again. This time, the regions you want to show darker, the regions we want to show shadow, in that part you will do the second hatching. The layer which are the region which is supposed to be like in between of totally light and totally dark, there you will leave the first layer, and the layer which in the region where you have to show darker sides, at that in that region you do the second hatching. If you enlarge the reference image, you can see that not all of the parts are crossed out, especially where there are crevices like below the trunk and all that, where the region that are more shadowed. In that region, I have drawn darker lines, and the region where there is light, I have left it like that. The second layer is very important. So before if you have any doubt at all, just ask. और अगर लाइटिंग का लग रहा है कि कहाँ डार्क और कहाँ लाइट रहेगा, तो मतलब इमेजिन करना कि कोई ट्री पेड़ के पास पेड़ में है, मतलब धूप में है, तो उसमें क्या है कि ऊपर से जो लाइट्स आ रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहे हैं वहाँ पे वो ब्राइट रहता है, तो ब्राइटर एरिया को व्हाइट ही छोड़ना है, और जहाँ नीचे वाला एरिया जो जो डार्क रहता है, शैडो वाला एरिया है, तो उसमें डार्क करना है। और वैसे ही कर रही, और ऊपर में क्या होता है कि जहाँ जहाँ कहीं कोई पार्ट ऊपर नीचे रहता है तो वहाँ पे भी डार्क रहता है, तो उसको भी करते हुए चलना है, ठीक है? And also again the point, start from the darker region and end the stroke in the lighter region. Second layer is the part that actually starts giving the 3D effect to your drawing. In the part where the folds are already visible, in that part especially you have to pay attention to how you're drawing the strokes, because after this part, once this part starts, there is no more correcting the drawing anymore. So if you mess up this part, then your drawing will be, it will not end up as you wanted it to be. तो अगर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लेना है, लाइक थोड़ा टाइम दे के पेशेंस से अगर करें तो अच्छा जाएगा, तो टाइम लो, करो, तब इतना जल्दबाजी भी कोई नहीं है, पेशेंस रहेगा तो सब सही बनेगा। And even in this part, you do not need to draw it very dark. Still keep your lines light, because there will be regions which are even darker than this. If you want them to be clearly differentiated, then you will have to make these lines lighter as well, but not so light that it will not be differentiable from the main first layer. You have to go on gradually increasing the pressure you put on the strokes. और अभी जैसे क्रॉस कर रहे हैं, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि पूरे ब्लैक नहीं करना है, व्हाइट स्पेस दिखना चाहिए। लाइक क्रॉस है, डार्क हुआ है लेकिन ब्लैक नहीं हुआ है, मतलब उसको पूरा फील नहीं किए हैं, ठीक है? तो उसका थोड़ा ध्यान रखने पे वो आगे जैसे डार्क शैडो हो गया, डार्कर शैडो है, ठीक, तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने में जरूरत पड़ता है, ठीक।
Again, if you was I audible just now? नो Hello? वो I तेरा was माइक saying, ऑफ I was saying कि before you draw anything, if you have any doubt at all, you should ask first, because now that you are drawing with a pen, there is no more correcting anything. So just ask. If you have the smallest doubt, just ask. And this time in second layer, you do not have to cover the entire part like what you did with the first layer. What we did with the first layer was we covered the entire tree trunk, right? This time, don't do that. Make short strokes, just short strokes. सेकेंड लेयर में ऐसा है कि जब हैच कर रहे हैं तो उस टाइम जो पहला लेयर है उतना लंबा स्ट्रोक्स नहीं देना है कि मतलब वो पूरा का पूरा डार्क हो जाए। लाइट वो लेयर 1 तुम्हारा लाइट रहेगा, उससे डार्क उससे छोटा रहेगा एरिया, ठीक है? तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो स्ट्रोक्स छोटे छोटे रखने हैं और किसी भी सेक्शन पे कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट पूछना है, यहाँ पे सब कुछ बता देगा। और ऐसा हमें नहीं करना है कि जैसे रेफरेंस इमेज ग्रुप में दे दिया गया है तो मीट नहीं देख रहे, रेफरेंस इमेज देख के खुद से कर रहे हैं। मीट में वीडियो देखते रहो क्योंकि टेक्निक पता चलेगा। रेफरेंस इमेज वो एंड रिजल्ट है कि इतना करने के बाद ऐसा दिखेगा जिसे तुम कंपेयर कर सकते हो अपना, लेकिन उसी पे केवल मतलब डिपेंडेंट नहीं रहना है। यहाँ पे टेक्निक दिख रहा है वो देख के और उसको इम्प्लाई करना है। उसके बाद देखना है कि कहाँ से मेरा रिजल्ट मैच कर रहा है, कहाँ पे मेरा गलती है, कहाँ मेरा अलग दिख रहा है, वगैरह वगैरह। तो मीट पे ध्यान रखो, वीडियो पे ध्यान रखना है, टेक्निक्स पे ध्यान रखना है। सर सेकेंडरी स्ट्रोक के एंगल्स का क्या बता रहे थे आप? एंगल्स का ऐसा है कि मतलब हल्का सा उससे मतलब टिल्टेड रहेगा, तो सेम पैरेलल नहीं रखना है, ठीक? क्रॉस टाइप हल्का रखना है और उसी में शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रोक देने हैं। The second lines that you draw, second layer, they should not the angle should not be the same as the first layer, because you need them to cross. You don't need them parallel. Also, reference image, don't refer to the main image that has been sent. Refer to the steps. If you want to refer to the reference image, then refer to the stepwise reference image to see how your steps should end up looking. समझ आया? ओके मैम। मैम Yes. मैम ये जो जैसे आप बना रहे हो इसमें वीडियो में, तो इसमें जैसे ये कर्व्स दिख रहे हैं बीच में, छोटे छोटे जो बैंड्स हैं, लेकिन जो मैं बना रहा हूँ उसमें नहीं दिख रहे। बहुत लंबा स्ट्रोक ले लिया होगा आपने। छोटा स्ट्रोक्स रखो, क्योंकि देखो सेकंड लेयर का फर्स्ट लेयर हमने इसीलिए लंबा लंबा स्ट्रोक्स लिया था क्योंकि हमको पूरा बॉडी को कवर करना था, पूरा ड्राइंग में वो बेसिक स्ट्रोक लेना था। पर जब हम सेकंड लेयर का स्ट्रोक कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसी रीजन में आएगा जो डार्कर दिखाना है, राइट? अगर उसको भी आप पूरा कंटिन्यूअसली कर दोगे तो सारा एक जैसा ही दिखेगा। ये सिर्फ इसीलिए छोटा स्ट्रोक्स बोला था, क्योंकि छोटा स्ट्रोक्स उसको कॉर्नर दिखाने में मदद करेगा। जैसे अगर वीडियो को एनलार्ज करके देखो, आई नो मैम, कैन यू रिवाइंड इट प्लीज अ बिट, जस्ट अ बिट, like half a minute or something. Okay, whatever. Ma'am, maybe not be in the meet. So, अगर नोटिस करो तो जो जो पार्ट में कर्व दिखाने हैं ना, वो पार्ट में और छोटी लाइंस है स्ट्रोक्स की। जिस पार्ट में मुझे
ज्यादा डार्क रीजन, एंटायर रीजन ज्यादा डार्क दिखाना है, वहां पे ज्यादा लंबे स्ट्रोक्स हैं, लेकिन जो रीजन में मुझे कर्व दिखाने हैं मैंने वहां पे बहुत छोटे स्ट्रोक्स यूज किए हैं। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरे लेयर का स्ट्रोक एक ही एंगल वाली, एक ही मतलब एक ही स्लोप रहे पूरे लाइंस का। नहीं, अगर आपको किसी जगह कर्व दिखाना है तो वहां पे धीरे 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 स्ट्रोक्स को टिल्ट करो सर्कल में। ओके मैम, यस मैम। Ma'am, but we are not darkening the curves of the trees with our pen. You don't need to darken the curves. You need to draw the lines so that the curves are visible automatically. See, initially we just drew the dotted line. We didn't draw an entire, continuous line. What was the reason for that? Because we don't want the line to be visible. We want it to be like when you keep an object, the shaded region, it's not visible in the line, right? It's an area where the shadow is not in the form of a line. It's in the form of an area, region, a dark region. Are you getting my point? Yes, ma'am, I am getting. So in order to make it as a region, you have to draw strokes, not a single border. Border will be 2D. It will give 2D effect. Like it's just a border. It's just a single line. But if you shade, if you form patterns like straight strokes, and the strokes combining together, they will form an area, a region. Okay, ma'am. और जैसा मैम ने पहले बोला था कि डार्कर एरिया से स्ट्रोक शुरू कर रहे हैं, तो जो बैंड्स में तुमको इफेक्ट दिख रहे हैं कि डार्क है, एक जगह ऊपर में लाइट है, तो मैम ने नीचे से स्ट्रोक शुरू किए, तो नीचे डार्क है और स्ट्रोक में वो फेडिंग इफेक्ट रहता है, तो ऊपर वो लाइट होता चला गया। तो तो ऐसे ही करना है। Okay, sir. और इसमें लाइंस जब स्ट्रोक्स डालते हो तो ऐसा मत सोचो कि सारा पैरेलल ही होगा, क्योंकि फ्री हैंड है तो हल्का अप डाउन रैंडमनेस रहना चाहिए, वो अच्छा भी लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा लाइन पैरेलल स्केल से खींचा हुआ, ऐसा ना लगे। फ्री हैंड है तो हल्का कोई कर्व रहेगा, हल्का कोई स्ट्रेट ही है तो स्ट्रेट में किसी में गैप ज़्यादा है, किसी में कहीं गैप कम है, या फिर एंगल हल्का सा अप डाउन है, तो वो रैंडमनेस रहना चाहिए। ठीक है। और जैसे मैम कर रही हैं कि डार्कर एरिया से स्ट्रोक शुरू कर रही हैं, तो वो धीरे धीरे ज़्यादा डार्कर होते जा रहा है, तो वो ट्रांजिशन दिख रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है क्यों क्यों डार्कर लग रहा था। Yes, sir. तो वैसे ही जैसे जहाँ से डार्क करना है वहां से स्ट्रोक शुरू करो, तो वहां पे अपने आप वो डार्कर होते चला जाएगा। जैसे जैसे लेयर्स बढ़ेंगी, या फिर स्ट्रोक शुरू किए तो वो फेडिंग इफेक्ट से भी डार्क होता है। ऐसा तो वो शुरू से ही वो देखना हो कि कहाँ डार्कर एरिया रहेगा, कहाँ लाइटर एरिया रहेगा, तो डार्कर एरिया से स्ट्रोक्स मारना शुरू करना है। और स्ट्रोक्स में वो फेडिंग इफेक्ट देखना पड़ता है कि पहले उसमें फेडिंग इफेक्ट रहता है तो अच्छा लगता है, और उसी का सारा खेल है। मतलब लाइटिंग जो दिख रहा है ना कि डार्कर से लाइट में ट्रांजिशन हो रहा है, वो उसी का काम है। नहीं तो अगर जैसे अगर तुम लोग कर रहे होगे तो होगा कि शुरू से अंत तक सेम प्रेशर से किए हो तो वो लाइंस जैसा लगेगा, तो वो 2D इफेक्ट देगा, तो उसमें लगेगा कि वैसा 3D इफेक्ट नहीं आ रहा है, शैडोज नहीं दिख रहे हैं, सारे सेम ही दिख रहे हैं, तो ये सब होगा। और अभी तक किसी पार्ट में किसी को दिक्कत है तो बताओ, कोई सेक्शन में।
जहाँ पे ना समझ में आ रहा हो या फिर टेक्निक दोबारा जानना हो। See, this part I will give you a lot of time because there is a lot of detailing here. This will take the longest to be done. So do it nicely, do it calmly, take your time. पैनिक नहीं होना है। और स्ट्रोक्स देखो अभी सेकेंड लेयर है, ठीक है, तो डार्क करने का जरूरत नहीं कि पहले लेयर से हमको डार्क करना है। सेम प्रेशर पे भी रखोगे तो जहाँ हैचिंग ज्यादा होगा वो डार्क अपने आप हो जाएगा। तो हैचिंग में कि लाइट प्रेशर पे चलाते रहो पेन, क्योंकि ज्यादा दबा के चलाओगे तो वो क्या होगा, 2D इफेक्ट आएगा। ठीक है, लाइट पेन रखो, अपने आप वो इफेक्ट दिखने लगेगा। Priyanshu, you in Yes, line? ma'am. In Yes, your ma'am. image, on the right side, it's a completely blank space. Don't leave it completely blank, okay? Shade Oh, some yes, regions there. ma'am. Don't Oh, make yes, it ma'am. I'm continuously doing it. light or continuously dark. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Give it some twists, give it some edges, give it some turns, some shaded regions, some areas. Okay, ma'am. लाइक लेफ्ट एरिया के लिए मैम ने किया था कि जो सेकेंड लेयर का एंगल जो चल रहा था उसी को आगे तक बढ़ा दिया, तो हल्का सा मतलब हल्का डार्क लग रहा है। ठीक है, मतलब पूरा वाइट भी नहीं है, मतलब हरा भरा कुछ लग रहा है। तो पूरा अगर ब्लैंक व्हाइट छोड़ेगा तो वो 2D इफेक्ट देता है, तो उसमें इतना शेडिंग वगैरह या फिर लाइटिंग इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं। तो हल्का हल्का भरा करो, पूरा ब्लैंक नहीं छोड़ना है। व्हाइट स्पेस दिखना चाहिए लेकिन पूरा ब्लैंक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, Yes, sir. Arpita, are you in the meet? Hello, Arpita. Yes, ma'am. See, you are telling me that you are having issue with starting the line from the borders, right? Yes, ma'am. You don't exactly need it from the border. When you put your pen, put it on the borderline and take it inside within the drawing. Like when it's looking actually, it's actually looking really nice. Don't go for the tree, don't go for the leaf parts. Don't do anything in the leaf part for now. Let's just work on the tree trunk. So see, in the upper regions of the tree trunk where you have drawn only the first layer, make it darker, make it cross it, okay? Cross it, intersect it Okay. again and again. And in the lower regions where you have drawn the like internal details, the dotted lines in the trunk, start from there. This time put your pen on that dotted line and take the stroke towards the side where you want to show like it. If it is curving that side, you can tell now which side of the trunk is curving in what side. You can imagine it in your head, right? So the region where you want it to be darker, take it to take it towards that side. Okay, ma'am. Okay, ma'am. If मैं you try want, कर रही हूँ. if you want to start it from the edges of the drawing, then put your pen on directly on the edge. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Sure. और स्ट्रोक से जब शुरू कर रहे हो तुम लोग तो ऐसा करो कि बाउंड्री से सटा के शुरू करो। तो उससे क्या होगा ना कि बाउंड्री के पास जैसे कितनों में हम देखें कि लेफ्ट साइड में व्हाइट स्पेस दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ शैडोज रहेंगे, वहाँ पे डार्कर एरिया रहेगा। तो बाउंड्री से सटा के शुरू करोगे तो व्हाइट स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, तो जब भी ये हैच कर रहे हो तो स्ट्रोक्स दे रहे हो तो बाउंड्री से स्टार्ट करो
और वो बीच में खत्म होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बाउंड्री से बाउंड्री तक, बाउंड्री से बीच तक आया उसमें फेड हो गया। सर जो कर्व्स है वहाँ पे कर्व जैसा लग नहीं रहा है, मतलब कैसे करें उसे? तो कर्व्स में ऐसा है कि पहले जब आउटलाइन हो रहा था तो उसमें हल्का डॉटेड बना के रखा गया था कि यहाँ पे कर्व्स आएंगे, ठीक है। ये सर। उसके बाद जो डॉटेड थे वहां से स्ट्रोक्स देना छोटा छोटा शुरू किया गया लाइट, ठीक। तो उससे एक फर्स्ट लेयर हुआ, उसके बाद सेकेंड लेयर के लिए उसका क्रॉस किया गया हैचिंग, मतलब उसमें छोटे छोटे स्ट्रोक्स चल रहे हैं। और उसके बाद सेम जैसे ट्रंक का जो लेफ्ट एरिया में दिख रहा है, ठीक है, तो ये एक तरह से उसका ही इनलार्ज पार्ट है, समझ में आ रहा है। तो जैसे पहले वहां पे भी एक पहला लेयर चला है, उसके बाद सेकेंड लेयर वहां पे भी दिए हैं, तो वो ट्रांजिशन के चलते वहां पे डार्कर और बेंड टाइप लग रहा है, ठीक है। यस सर। I will do a thing. I will send pics, okay? How to draw curves and edges, step by step, one layer after another. Just wait for a while. उससे ज्यादा समझ में आएगा। मतलब अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा, जैसे अभी मान लो कर्व्स में लोग बोल रहे हैं 2D में आ रहा है इफेक्ट या फिर सही नहीं बन रहा है, कर्व्स कैसे बने, तो सिंपली पूछ लो, हम लोग बना के भेज देंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे करोगे तो कर्व्स आएंगे, ठीक। और जब मतलब दोबारा प्रैक्टिस करोगे हैचिंग का, तो उसमें इम्प्लाई करके देखना आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस करोगे तभी स्ट्रोक्स और वो इफेक्ट्स का आएगा, तुम लोग को हैंड पे आदत चढ़ जाएगा। एक बार में देख के नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। और जो कर्व्स वाला बोला वो मैम भेज देंगी, तो उससे प्रैक्टिस करना, तुम लोग को फिर कर्व्स भी आने लगेंगे अच्छे से, ठीक है रुखसार। हाँ यस सर। ठीक। देव त्यागी, है मिठू? यस सर। हाँ। भाई तेरा हम देखें तो उसमें ऐसा है ना कि जैसे तूने बनाया, ठीक है, तो जहाँ तूने हैच किया है वो पार्ट सही है, ठीक, लेकिन जहाँ व्हाइट स्पेस है वो पूरा व्हाइट है, समझ रहा है। जी। तो वहां पे हल्का हल्का जैसे जो फर्स्ट लेयर था, ठीक है, या फिर सेकंड लेयर है तो सेकंड लेयर हल्का हल्का व्हाइट पे चला गया, ठीक, तो ऐसा कुछ दिखा दे तो वो व्हाइट वो भर जाएगा, ओके सर। समझा। नहीं तो तेरा व्हाइट और ब्लैक पूरा अलग अलग दिख रहा है, ठीक, ओके तो वो 2D इफेक्ट दे रहा है, वो उसमें 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 उतना अच्छा आ नहीं रहा है, ठीक है। समझा। Sir, where can I send my work? I think I messed up somewhere. तो ग्रुप इंडक्शन ग्रुप है ना व्हाट्सएप वाला, व्हाट्सएप ग्रुप मतलब मैं ऐड नहीं हो रहा था, फुल हो गया है। तो टेलीग्राम पे हो? टेलीग्राम पे मतलब आर्टफ्रिक्स ग्रुप में भेज सकता हूँ? हाँ भेज दो। ओके। See, I've sent the images. Keep on repeating this in small regions. So it will automatically start coming well. It will start giving that effect when you do it repeatedly for small regions. That is how you show curves, edges. From which point? I can't find the point where I start the shading, like cross shading. Did you not draw the hints that I told, like the dotted lines in the tree trunk initially? I did. I think. Or whichever part. See, wherever your tree trunk shows an edge or shows a curve, the outline of your trunk, you can just start from there. Okay.
और किसी को कहीं दिक्कत है? और सबका यहाँ तक हो गया तो आगे बढ़े। किसी का नहीं हुआ तो सर स्टिल डूइंग। अच्छा अच्छा बस 2 मिनट और वेट कर लो सिर्फ। ठीक है, मतलब यार अभी आराम से Let करो, let them कोई take their time. Let them take their टेक्निक। time because this part will take the longest. ओके ओके, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि टेक्निक सबको समझ में आ रही है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा है ना। देखो नहीं फर्स्ट, समझ आ रही और है। जिसका भी फर्स्ट टाइम है उसको हो सकता है दिक्कत, कोई बात नहीं, ठीक है। बट हाँ, अगर समझ में आ रहा है कि हाँ क्या करना है, बस दैट्स द पॉइंट, बस हमें उतना ही चाहिए, ठीक है। बाकी एक बार में तो कुछ नहीं होता है, मतलब ये हम लोग सिखा रहे हैं तुम लोगों को, तुम्हें प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है, अगर तुम्हें एक्सेल करना है तो। और तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, तुम अगर 2-3 बार करोगे, यूज करोगे और बनाओगे तो तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है। और अगर कर्व्स का जैसे बहुतों को लोड है कि नहीं हो रहा है, तो उसका उतना भी लोड ना लो, मतलब ट्राई करो, हो जा रहा है तो सही है, नहीं हो रहा है तो दोबारा मैम भेजेंगी तो उससे बना के देखना। अगर कर्व्स के इफेक्ट आने लगे तो दोबारा से कोई हैचिंग का करके देखना, प्रैक्टिस। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा ही फायदा है। और जितने बना लिया है रेफरेंस इमेज से चेक करते रह रहे ना कि कहाँ पे कम, मतलब कम ज्यादा कहाँ डिफरेंस दिख रहा है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे ज्यादा मतलब करने की जरूरत है। रेफरेंस इमेज को कोई पिन करते रहना, सेकेंड ईयर्स तुम लोगों में से कोई एक, ठीक है। काफी सारे फोटोज आ रहे हैं ना, तो ये लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे और टाइम जाएगा। यस सर, वो डालते रह रहे हैं। ओके, Sir, there is no problem if the lines get curved a bit. कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ तुमने गलती करी है और नेक्स्ट टाइम वो रिपीट नहीं करोगे तो कोई दिक्कत I नहीं mean, when I'm like shading the lines with at corners, it gets curved. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थोड़ा तो होगा यार, इतना मतलब
स्केल से तुम तो ड्रॉ नहीं कर रहे हो ना, ठीक है? यस सर। हाँ, तो उतना चलेगा, ठीक है? You don't need the line to be exactly straight, okay? It's fine. Also, those who are drawing with pencil, sharp pencil will give you darker strokes than blunt pencils. Okay, so Kartika, I guess we should go on because there's a lot Uh, left. Yes, yes. Sir, like I have sent the image in the WhatsApp group. So can you please tell what else can I do? Priyanshu, it is the last image. Okay. सही यार, बट ये राइट साइड पे तुमने जो ये सिमेट्रिकल बना दिया ना, ठीक है, मतलब ट्राई क्या करो कि थोड़ा अनसिमेट्रिकल रखो, मतलब समझ रहे हो ना? ट्रंक में कुछ Yes, ऐसा sir. सिमेट्रिकल नहीं होता, ये जो तुमने चार ये बनाया ना शेप्स टाइप, ठीक है, Yes, sir. इसमें ये तुम मेरे थोड़ा को थोड़ा डिफरेंट और टाइप लग रहा है. हैचिंग करके और थोड़ा अलग अलग कर सकते थे, ठीक है? Okay, sir. बाकी रेस्ट इज गुड, मतलब तुमने स्पेस काफी सही रखा है लाइंस का। Yes, sir. Thank और you. कार्तिका, एनी अदर टिप्स? और ऋषि? और Yes, प्रियांशु I'm तुम्हारे listening में you. बस एक चीज है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड में डार्कनेस बराबर है, ठीक है, जबकि राइट साइड थोड़ा ज्यादा डार्क होना चाहिए, तो वो एक बस है, बाकी सब तो सही है, मतलब Okay, जैसे sir. हाँ, राइट साइड ही ना सेम सेट सेम हो गया। पॉइंट है। मतलब तुमने दोनों भी बॉर्डर से डार्क ले लिया है, दोनों साइड से डार्क मतलब स्ट्रोक स्टार्ट कर दिए। प्रेफरेबली क्या होता था, अगर तुमको राइट साइड का स्ट्रोक्स था तो वहां पे सारी एंड्स को तुम कॉर्नर तक जाने देते और बीच से स्टार्ट करते, जहां से तुमने शेडेड पार्ट्स दिखाए थे। Okay, ma'am. Yes, ma'am. मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा. हाँ, अब बस अभी जो पार्ट टेक्निक पे ध्यान देना है। हाँ, अब जो पार्ट तुमको ज्यादा डार्क करना है ना, उसके लिए तुम ये कर सकते हो कि नाउ इसके बाद जो तुम उसमें एडिटिंग्स करो, वो सारी के टाइम तुम राइट साइड वाले एज से स्टार्ट मत करना। Okay, ma'am. Yes, ma'am. तो आगे बढ़ा सकते हैं। और कोई बच रहा है क्या? अब यार थोड़ा, अब मतलब काफी लेट हो रहा है, ठीक है, तो ट्राई टू कैच अप, मतलब थोड़ा जल्दी कर लो यार, ठीक है? हाँ, now हाँ। those who are not done with this with the trunk yet, only detailings are left that you can do in the end as well. Now in the roots, when you're doing the roots, you have to make even shorter strokes because roots are very fine details. They're not like the middle part of the trunk that are broad. In roots, there are very small folds. So you have to draw very, very small strokes there and keep them light at the same time because there will be darker parts of the roots that you will need to shade in the end. और रूट्स में एक ऐसा भी कर सकते हो कि रूट्स में शैडो हमेशा नीचे रहती है, तो स्ट्रोक्स नीचे से ऊपर की तरफ करोगे तो इफेक्ट सही आएगा। It's looking nice for right now, right? Overall look, everybody's drawing, it's looking nice, right? Juniors? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. There will be detailings later on, like there are some parts that you will darken even more. There are some details you will add, small details, like a random branch from somewhere that we will, that is for the end.
See, when drawing the roots, note that I have drawn all the curves with very small strokes. Like I said, we have to represent an area. We don't have to represent a borderline. So that is the reason we are not representing it with a continuous line. We are drawing small strokes to represent it like an area, shaded region. But you don't have so much space that you can draw big strokes there. So go for small ones and take them in a curve, like you did in the middle part of the tree trunk. Don't make it straight. Like take it in an arc, small arc. It will give the effect of curve. और एक चीज और, जैसे लेयर्स पे लेयर्स चढ़ते जाएंगे तो स्ट्रोक्स का साइज छोटा होते जाएगा, क्योंकि उसमें अब डिटेल्स बढ़ रहे हैं। तो जैसे अब ये ब्रांच पे हो रहा है तो इसमें स्ट्रोक्स छोटे आएंगे। ठीक, ट्रंक पे थे तो स्ट्रोक्स लेयर 1 में बड़े थे, लेयर 2 में छोटे हो गए, लेयर 3 में और छोटे होंगे। ठीक, जैसे रूट्स में भी छोटे हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस छोटा है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना है कि छोटे स्पेस में और जहाँ पे लेयर्स मतलब सेकेंड लेयर थर्ड लेयर है तो स्ट्रोक्स छोटे होते जाएंगे और उसका स्पेसिंग भी कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट लेयर में स्पेस ज़्यादा रहेंगे स्ट्रोक्स के बीच में, सेकेंड लेयर में थोड़े से कम रहेंगे स्ट्रोक्स के बीच में स्पेसिंग, फिर थर्ड लेयर में और कम हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि थोड़ा डार्कर इफेक्ट आते रहेगा। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना रहता है, बाकी सब सही है। Exactly. So this time the strokes now that the strokes that you're drawing, they have to be finer than the ones you drew before. Let them be very close to each other and let them draw. You can use pressure or put pressure on your pen now. Like they should be darker than the ones you drew before. That is how it will be different than the ones you have drawn before. And those who did not start with the leaves part before, you have to start with the leaves now. So we will start in the same way, with the first layer being very light and very sparse, like a lot of space between all the lines. Similar way, you have to cover most of the parts or part of the leaves in the first layer itself, but not completely. You will still leave some blank space on the right side. और जैसा लीव्स में दिख रहा है कि लेयर्स में जो स्ट्रोक्स हैं वो स्पेस कम है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्डर से फिक्स स्टार्ट हो रहा है। रैंडमनेस इसमें है कि बीच से में कहीं है, कहीं बॉर्डर पे सट के है, फिर बॉर्डर से थोड़ा सा स्पेस दिखे है, क्योंकि ये ट्रंक नहीं ना है, ये लीव्स है। लीव्स में बहुत सारी लीव्स होती हैं, एक मतलब सिंगल ट्रंक नहीं कि शैडो पड़ रही है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बॉर्डर से सटा के स्ट्रोक शुरू करने हैं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रोक्स बीच से शुरू होंगे, कहीं कहीं पे बॉर्डर से शुरू होंगे, कहीं बीच से, कहीं साइड से। तो ये सब भी देखना है। Leaves are the easiest part of the drawing actually. You have to, it is totally random. There is no pattern in there. The only thing you have to keep in mind is that not to make all of it completely black. Mostly after the first layer, all the layers that you draw, all the strokes that we draw, keep them small, keep them short, and try to show edges as much as you can. और जो वाइट स्पेस है उसको हमेशा मेंटेन रखो, क्योंकि वो पूरा ब्लैक हो जाएगा या ब्लू हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, प्लस में वो उतना इफेक्ट नहीं देता है कि टर्न्स या ट्विस्ट है, ठीक है, और पैटर्न्स उसमें नहीं दिखते हैं। तो जितना वाइट स्पेस रख सको स्ट्रोक्स के बीच में उतना सही रहेगा, वो इफेक्ट देगा लाइट्स का, शेडिंग का, और फिर टर्न्स कर्व्स वगैरह सब। Pay attention to this part. See, here I'm drawing the border region of the leaf section, okay? And it is not continuous. Like I said, you to break the lines when drawing the outline of the bark. Similarly, you have to break the lines when drawing the outline of the leaf part, but you have to make it even shorter. Don't not make it even as means not even as smooth as you drew the trunk. It is very small lines making the border complete together.
In some part, just you can show one or two small shapes, random shapes, as if the leaves are flying out. But those are details, they can be added later. When you're drawing the border part of the leaf region, make them curve shape, make the strokes curve outwards, not inwards. और बॉर्डर बनाने टाइम ऐसा नहीं सोचना है कि हाथ को सेक करके कंटिन्यूस बनाएंगे तो वो बन जाएगा। उसमें मतलब डैश टाइप रहना चाहिए कि बीच बीच में ब्रेक डाउन्स रहें। ठीक है। You can zoom in the video to watch how it is actually coming Ma'am, out, can you how repeat it the is leaf turning part? out. Yes. Repeat the leaf part, CD. Yes, I know, ma'am. Can you rewind it, please? Rewind it some more. Yes. See, the reference image on group is for the leaves part. It's very clearly visible how it's done. Since it's a close-up image, so you can very clearly see how the border regions are coming up and how this intersection is what I was talking about. You wanted to know how to make curves, right? Pay attention to that. It is visible there. And when showing the dark regions of the leaf area, you will start from any middle part, like you did in the trunk, right? From where you have drawn the dotted lines, you put your pen on the dotted line and start the stroke from there. Similarly, start the stroke from the middle region of the leaf part to show that overlapping leaf sections. The section that is below will have more darker region, more shading part. और लीव्स के बॉर्डर में देखा हो कि रैंडम शेप्स हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेट लाइन वगैरह खींच रखा है। ठीक है। तो रैंडम लाइन्स मतलब रैंडम शेप्स हैं, कर्व्स हैं और ब्रेक डाउन मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस कोई भी लाइन कर्व बनाए जा रहे हैं या फिर हैंड शेक करके कर रहे हैं तो थोड़ा सा जीटर आ गया तो लगेगा कि ब्रेक डाउन है। ब्रेक डाउन मतलब पेन उठना चाहिए वहां से। ठीक है। दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। और वैसे ही ट्रंक में मतलब बॉर्डर दे रहे हो बाउंड्री तो उसमें वैसे ही करना है। ट्रंक हो या फिर लीव्स हो, कहीं का भी। If you have any doubt regarding the leaf part, you can ask. Again, I'm telling you, keep the strokes short and start it from the middle part of the leaf. Only in the lower sections of the that leaf region, you can start it from the border. लाइक जहाँ ब्रांचेज हैं वहां पे बॉर्डर से शुरू कर सकते हो क्योंकि ब्रांचेस पास डार्क यस रहेंगे। यस बॉर्डर जो ब्रांचेस का बॉर्डर है वो डार्क रहना चाहिए, तभी तो तुम्हारी ब्रांचेस दिखेगी, वरना लीव्स के बीच में ब्रांचेस खो जाएगी। तो ब्रांचेस के आउटलाइंस को डार्क कर दो, लेकिन
डार्क कैसे कि लीव वाली रीजन की तरफ वो डार्कर लाइंस, लाइक स्टार्ट फ्रॉम द edge of the branch and end it in the middle section of the leaf somewhere. Or again, strokes intersecting होने चाहिए. Don't make them all the same parallels. और स्ट्रोक्स दे रहे हो तो रैंडमनेस रहेगा बराबर। पैरेलल में भी करोगे तो सोच रहे हो कि स्ट्रोक्स में सीधा लाइन आना चाहिए, लेकिन थोड़ा कभी कभी कर्व भी आता है, तो उससे कोई उतना लोड नहीं है। ठीक है, रैंडमनेस से अच्छा लगता है, थोड़ा मतलब बनाया हुआ लगता है, ऐसा लगता है। ठीक है, अच्छा। और इसमें थोड़ा सा खुद से भी इमेजिन करते रहना, जैसे लाइट्स आ रहा है तो कहाँ शैडो पड़ेगा, कहाँ डार्क एरिया रहेगा, कहाँ लाइट एरिया रहेगा, तो कहाँ से हमें मतलब कहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, ये सब खुद से भी थोड़ा इमेजिन करते रहोगे तो आगे प्रैक्टिस करने टाइम काम आएगा। कि खुद से जब कर रहे हैं तो लाइटिंग कहाँ से रहेगा, थोड़ा वो देख के कहाँ से स्ट्रोक्स खींचने हैं, तो इफेक्ट मतलब पूरा कांस्टेंट रहेगा पूरे आर्टवर्क में। नहीं तो कहीं पे होगा फिर ट्रंक में क्या है कि लेफ्ट से राइट लाइट आ रहा है, लीफ में है कि राइट से लेफ्ट लाइट आ रहा है, तो सही नहीं लगेगा। Or don't try and make all the effects in one go itself. All the dark regions and the semi-dark regions, don't try and draw them in the same go. First, you can just overlap it again and again to show darker regions. There is no need for you to just directly draw darker strokes if you want to show dark regions. Because then, if you have drawn something very light, you can darken it later on. But if you already drew a dark stroke, then you can't lighten it later. Keep this in mind. Also, another point that I wanted to say was that wait, I forgot. I'll tell you when I remember. और स्ट्रोक्स कभी बनाओ तो जितना लाइट हो सके उतना स्ट्रोक्स बनाओ, क्योंकि अगर डार्क करना है तो 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर पे डार्क हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पहले में डार्क कर दोगे तो डार्क के ऊपर डार्क चलेगा तो उसमें इफेक्ट्स नहीं आएंगे, लेयरिंग का कोई उसमें फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो जितना लाइट से शुरू कर सको उतना अच्छा। Yes, what I was telling was avoid symmetry. Try not to make it look symmetrical, because the beauty of this drawing is its randomness. There is nothing symmetrical about it. If you make it symmetrical, it will not look good. फिर अगर सिमेट्रिकल बनाना है तो उसके लिए अलग होता है, जैसे बिल्डिंग या आर्किटेक्चर बनाना है वहां पे सिमेट्री चलेगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि जो जिसका बना रहे हैं, ठीक, वो खुद सिमेट्री में है, लेकिन पेड़ वगैरह तो सिमेट्री में रहता नहीं है, तो वो ऑड लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे सिमेट्री से बचना है। ठीक, In the leaves, anywhere we can keep 3 layers, anywhere 2 layers, right, sir? Yes, you can लेकिन do that. अगर But try ब्रांचेस not दिखा to रहे make हैं, all of it overlap. Don't overlap it entirely. Like if you are drawing 3 layers on the entire region, then it will all look the same. लाइक से मतलब एरिया दिखाना चाहिए ना कि लीव्स में कोई डार्क एरिया है कोई लाइट एरिया है। ठीक, ऐसा नहीं कि हर जगह डार्क एरिया है हर जगह लाइट एरिया है, तो वो एक इफेक्ट के लिए रैंडमनेस होना चाहिए कि यहाँ पे डार्क ज्यादा है यहाँ पे डार्क कम है, मतलब केवल 2 लेयर है, यहाँ पे 3 लेयर है, एक जगह केवल 1 ही लेयर रहेगा, तो वो रैंडमनेस के चलते थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब इफेक्ट्स आएंगे डेप्थ का। Okay, sir. Prerna, in your region, the issue with it is that the lines are too random. Like draw random lines, but not very random. Like don't let all of the strokes go here and there. Let it look uniform, but when you put another line on top of that, at that time, try not to, at that time you can just tilt the angles, but don't, like if you're drawing one continuous strokes, then let them all be the same type. Also, when you're drawing the edge of the region,
Don't make it a continuous line. I told you not to make it a continuous line because when you are shading a lot of parts, you will just let it leave blank, let it leave white. At that time, that lines would be visible. So next region when you draw, don't don't make it a completely block outline. Make it dotted. Okay, ma'am. I'll try. और रैंडमनेस में ऐसा है कि वो रैंडम अपने आप हो जाएगा, जैसे स्ट्रोक्स पैरेलल खींचे जा रहे हो तो एक आध अपने आप हाथ से हो जाएगा, ठीक है। ये इंटेंशनली रैंडमनेस नहीं लाना है, क्योंकि इंटेंशनली करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा और वो सीधे ऑफ लगेगा कि ना ही क्रॉस लगेगा ना ही पैरेलल लगेगा। तो मतलब इंटेंशनल रैंडमनेस नहीं लाना है, रैंडमनेस अपने आप आ जाए तो वो चलेगा, वो आ ही जाता है। You will get a hang of it. This is just the first leaf region you're drawing, right? As you get first, this is the trial part. Now, when you know what to do and what will look nice and what will make your drawing look bad, then you can adapt accordingly, according in the next regions. और किसी ने भी किसी मीडियम से भी अगर आर्ट बनाया है तो उसे पता हो कि पहले लाइट यूज करते हैं लेयर, उसके बाद डार्क डार्क पे ग्रेजुअली इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही है कि पहला लेयर लाइट रहेगा, ज़्यादा उसमें स्ट्रोक्स में गैप रहेंगे, ठीक। सेकेंड लेयर में गैप कम रहेगा, डार्क ज़्यादा रहेगा, ठीक। उसके थर्ड में और ज़्यादा डार्क होगा, ऐसे ही डार्क होते चला जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मतलब हर मीडियम में सेम प्रिंसिपल यूज होता है कि लाइट के ऊपर डार्क चढ़ते जाएगा, क्योंकि डार्क के ऊपर लाइट चढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो लाइट पहले जितना लाइट स्ट्रोक्स रखो उतना सही रहेगा। और स्ट्रोक्स मतलब सही स्ट्रोक्स लगाना सीखो कि शुरू में ये है डार्क रहेगा, उसके बाद जाते जाते फेडिंग इफेक्ट आएगा, स्ट्रोक्स खींच रहे हैं तो वो लाइंस पतली होते जाएंगी, ठीक। और गैपिंग अच्छा मेंटेन रखना भी सीखो स्ट्रोक्स में कि ज़्यादा मतलब पतला पतला भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रोक्स का प्रैक्टिस करना, वो सुधर जाएगा, अच्छा रहेगा। Satvik, in your image, are you here in the meet? Hello, Satvik. Yes, ma'am. See, in your image, the issue is that the second layer that you have drawn, it's very small. It looks like a patch in the middle. It doesn't start from anywhere, it doesn't end anywhere. So if you like make it, start it from the branch part, start it from the edge of the branch, and then let it end in the middle. If you start it in the middle and let it end in the middle, and it's not, try to merge the two parts, okay? Try to merge them. Okay, ma'am. I'll try. Don't leave the like what in some or in your region what you've done. Most of the part in the corner is blank, like from all the sides. Like cover one side. Suppose if the light is coming from the right side, then leave the right side part blank. But when you are shading the lower part, like the lower left side region, the one below the branch, in that part, darken the edges of the region. Shade there more, darken it more. Okay, ma'am. I understood. लाइक सात्विक तुम्हारे में कि ब्रांचेस में अभी डार्क नहीं है, ठीक है, तो उसका करना। और पैचेस अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने का ट्राई करना, कनेक्टेड रहेगा तो वो इफेक्ट सही रहेगा। Okay, sir. I'll try doing it with the second leaf patch. ठीक ठीक ठीक। Vaibhavi? Hello? Yes, ma'am. See, in your trunk region, what is the issue is that your lines are very fine. Okay? They are so fine that they all merge together. The crisscross are not visible there. So what I will suggest you is that the second layer that you add now, do not make it fine, okay? Now that your basic layer is already fine enough,
The next layer you add, try to leave spacings between the strokes. Also, again, your part, it's like separated and concentrated towards the edges. The middle part is very light. The counters, the edges, the shadows, they're not visible in the middle section of the region. The trunk looks darker towards the edges and lighter in the middle. Try to avoid that. Yes, All ma'am. right. Hello, Nikhil, are you in the meet? Nikhil? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, with your drawing, the issue actually is that there are light and dark proper contrasts, but the region that you've done dark is like completely dark, and there is like a completely light region. There is no in between transition, it's not there. Transition part is not there. There are, it's like only two shades are visible. One is very light and one is very dark. It looks like first you drip a light layer, and on top of that, it's a dark layer. Okay, try to avoid that. Some regions there have to be an in between. Very dark. I told you that the very dark part you have to leave for showing extremely dark shadows, like the very edges of the lower side. Getting my point? Yes, ma'am. So now that you've already done, what I will suggest you is that don't darken it anymore. Leave it like that. First complete the leaf part, then in the detailings I will tell what to do with the trunk later. And one more thing, Julia, so please follow the screen share, the video which is being showed on the screen, because I can see that you all are just blindly doing. I mean, you are just seeing the reference and you are doing what. I mean, you are not following, ma'am. What is she doing? Like, look for once that what is she doing? How her hand is going on with the leaves. Okay, and then you try. It is important to see from where to start the strokes and how to turn them. If you do not know, your lines will not come proper. That is the reason the video is being played, so that you can see how the strokes are coming out. References for those who want even more details, like video, it's not that clear. But in a reference, you can see each and every stroke crisscrossing. For that, the reference has been sent. It's not for you to just see and copy the reference, or we could have just sent the reference. There was no need for a meet and all the videos. The reference is just the final result. Yeah? You don't know how to proceed with that. Okay. So for that, you have to follow the screen share.
Shubham, hello? Shubham, are you in the meet? Yes, ma'am. Yes, your leaves part looks nice. So the region that you've darkened, right, in the lower near the branches, Yes, that ma'am. that if you are doing the same thing in different sections of the same region, don't connect those. Okay, it will look better if you don't connect those. Like Okay. just like a hill, small hill in the middle of the leaf. Like some parts are deep, some parts are lower, right? Some leaves are hidden behind the others. To Yes, ma'am. represent that part, show dark region, it will look better. सबको टेक्निक समझ में आ रहा है ना? थोड़ा Yes, सा sir. प्रॉब्लम हो रहा है. देखो फर्स्ट टाइम है तो प्रॉब्लम तो होगा, ठीक है, मतलब द लीव्स पार्ट इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक, ओके, सो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा सभी को, बट अगर तुम लोग टेक्निक सीख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से नेक्स्ट टाइम आर्टवर्क चूज करके और प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके सर. यस सर, समझ आ रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वक्त थोड़ा टफ लग रहा है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मतलब दिस इज द मीडियम लेवल ऑफ हैचिंग वी आर ट्राइंग टू लेट यू नो, ओके. तो तुम लोग अगर अगर लिंक्स वाला पार्ट तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो तुम लोग खुद से कुछ ट्राई कर सकते हो, ओके. सी लीव्स बाकी पार्ट का क्या है कि लीव्स पार्ट में, ट्रीट पार्ट में तुम कैसा कर रहे थे, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रोक्स थे, बड़े बड़े स्ट्रोक्स थे और बड़ा बड़ा रीजन था जो तुम कवर कर पा रहे थे. बट इन लीफ पार्ट देर आर अ लॉट ऑफ शेडोज एंड अ लॉट ऑफ लाइट स्पेसेस. If you draw a little bit continuous space, if it goes a little bit longer, it will look bad. If it is too short, it will look bad. You have to find that perfect balance, and you will find it as you go on drawing the drawing. मैम बॉर्डर एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है उसके. बॉर्डर एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है तो बॉर्डर एरिया से स्टार्ट करके ज्यादा लंबा लेके मत जाओ. एंड इट शॉर्ट. ओके, एंड इट शॉर्ट. जैसे अगर अभी जहाँ पे पॉज्ड है वीडियो, अगर उसको एनलार्ज करके देखोगे तो जो इन द रीजन दैट इज एट द टॉप, वेरी टॉप, एंड द रीजन जस्ट बिलो दैट which has not been started. See, in order to show the contrast between the light and dark region, as the other one is at the very front, I left it entirely white. And the below part, I especially darkened it in order to in order for it to be clear that it is under the other one. The regions that are below, darken them. And when you darken them, do not make it larger strokes. You have to make extremely fine, small strokes. What you have to do for the border region is small strokes. Go with very small strokes, and don't make it continuous. Make it breaking. Small strokes, curved strokes, broken strokes. लाइक अगर ये हार्ड लग रहा हो किसी को या फिर टेक्निक समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसा कर सकता है कि क्यूब बना ले या फिर स्फीयर बना के कर्व या स्ट्रेट पे वो करे, ट्राई करे. तो इसमें 3D शेप्स रहेंगे तो थोड़ा शेडिंग और लाइटिंग का समझ में आएगा. और अगर इमेज चाहिए होगा तो गूगल पे सर्च करना, आसानी से मिल जाता है, ठीक है, तो ट्राई करना. Ritika, are you in the meet? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, see, for the third layer, you said, right? Yes, Third ma'am. stroke. For the third stroke, I will suggest you only do it in the region where there are shadows, very deep shadows. It's looking really nice overall. The leaf part is especially coming well, okay? It's looking really nice. And you have also done a good job with the border part. So what you have to do this time is, ki, when you're going for the third layer, do it only in the region where you need very dark, like where we have to differentiate between the branch and the leaf section. In that region, you can do it dark, or at the lower left edges, left lower edges of the leaf part. Even in the trunk layer, in the left side, it's like the border is clearly visible. In your left side outline of the tree trunk is clearly visible. Try for it to be merged. Try for it to be merged. When you draw the strokes, draw it from the left side so that it will be merged. ओके मैम, करती हूँ अभी.
Thank you, ma'am. Ma'am, you said in leaf part we have to draw small strokes. I have one Ye- doubt that in leaf part we have to draw the lines nearer, or we have to draw lines of having a space between them. Make it fine. Make it fine. It all depends on whether you have to represent a lighter region or whether you have to represent a darker region. If you want to represent a darker region, it will be better if you make it fine and small. Okay. You are doing देखो detailings. फाइन बनाओ बट ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस लाइंस बना दो, ठीक है, वरना इट विल लुक लाइक पैच ऑफ अ ब्लैक एरिया, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएट होना चाहिए कि हाँ तुमने लाइंस यूज करके और लीव्स बनाया है, ओके, दैट इज द पॉइंट। Yes, Okay, sir. fine, but not so fine that it Yeah. will look like shading. Because hatching is not shading. Hatching is only beautiful when it's visible that the strokes are visible. So if you even when you are making it fine, then don't merge the lines. Don't merge them all up together. Okay. और जब स्ट्रोक्स बना रहे हो तो थोड़ा सा स्पेस रखा करो, कितना भी लेयर हो, ठीक है। ठीक है सर। Okay, how much are you done with the leaf section? Juniors? Is there someone who is still not done? तो मी मैम। Yes, ma'am, I also not done. Yes, ma'am. Okay.
Okay, Kartika, so I guess you should move forward. Only the Yes, the end part is left now, detailing part. yes. And I guess all of you have now got the basic idea what is hatching all about and how it is done. Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. So don't just leave the artwork like this. Okay. You just try to make some more on the hatching one. You can get the references from Pinterest. Okay. It is an app which is used to get references for artworks. Okay. Or else you can get the images from Google also. There is no artwork in which you can excel from the very first time. You will get better at it as you go on doing. So you guys done with the tree part, that leaf part now? Mostly at least? Yes, ma'am. Tool. Is there anyone who has not completed the basic layer also for the leaf part? No one? That's good then. So tell me one thing, are you guys enjoying the process of learning hatching? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So is it fascinating? Yep. Yes, sir. It is. Okay. Yes, sir. सर ये हैचिंग प्रोसेस फेसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं? तुम कहीं पे भी यूज कर सकते हो. फेस में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर. Yeah, there is nothing called difficult. Okay, it all depends on how you apply. Okay, और तुम कितना टाइम ले रहे हो. ठीक है. मतलब अब ऐसा नहीं कि तुम ये आज तुम सीखने के बाद डायरेक्टली तुम एक फेस उठाओ और उसी को हैच करना शुरू कर दो. ठीक है. इट इज नॉट द करेक्ट. मतलब इस तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं करना है. ठीक है. मतलब लेवल बाय लेवल ट्राई करो. ठीक है. पहले इससे अच्छा कुछ बनाओ फिर उससे अच्छा. ठीक है. एंड जब तुम थोड़ा तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ तुम फेस पे हैचिंग कर सकते हो, देन यू शुड गो फॉर इट. ओके. ओके सर. या Pause the video, ma'am. So now this is our drawing. It's basically done. And now there are only details left. One of the details are the leaves that are, like I said, that there are some leaves that are flying, that are not really joined to the main region. Those you can just represent as random shapes, but not too big, not too tiny. They're small. They shouldn't be so big that it will be very obvious. and one And thing don't also, make if you want you can improvise, you know. If you want you can add some stuffs which you think it will look better on your artwork. Okay. Yeah, Kartika, continue. don't make too many of them because it will not look it will become too messy. Then the main elements will be overshadowed by a lot of flying objects. And after this part, we will do the ground region, and then you are almost done with your drawing. So let's continue. Juniors, done till here? Yes, ma'am. So for the ground part, a Ma'am, very light line. Yes? wait for a while. Yes, okay.
No problem. You can complete the leaf part afterwards. Yes, You see, just, yeah. take your time. Just adapt, let yourself adapt to that. If you are not done with the leaf part, then leave it and then do it calmly later on. Yes. So first, just let's just get done with the ending part. The small details. A random grass somewhere, random leaf somewhere. And don't make it very dark. Make it very light. And in order to make ground, you don't have to be very specific about strokes on ground. You just draw random strokes. But when I say random, it doesn't mean that like you start a stroke in left direction and end it in the right direction. No. Small details in the tree trunk, like a small branch in a random position. And when you're drawing the lines on the ground, make it very light. Do not put pressure on the pen. See, the ground part is just basically scribbling. And if you want to add a stone or something, now the stone part, if you see the stone part, there I have drawn very dark region one side and completely light region the other side. This is very different from what I have been telling you about the tree trunk. The reason for this is tree trunk and all, they are curved usually. There are not such sharp edges in them. But stone is like, if you put a stone is like a cube. One side is in complete, that's the side that is against the light. It will be completely against the light. So by drawing that little part in the very end of the stone, one region you have to make the contrast between region is very sharp. There are no, like in the middle of the in the tree part or in the leaf part. What you have been doing is you have been merging the areas, merging the regions. There is no region which is completely dark and which is directly contrasting with completely light. But in stone, it is the case. One region is completely light and the other region is completely dark. This is for sharp areas.
Okay, so most of you have finished or still drawing? So finished. Okay. So at the end, you can all see the result of your patients, no? Anyone, yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. It is very gorgeous. Okay, okay. Okay, so if people are still hatching, you can complete it afterwards. Now we will take a screenshot of the meet. So if you all can, please open your camera. Second is जो भी मीट में तुम लोग भी कैमरा ऑन कर लो यार, if it is possible. एंड जिन्होंने पेपर यूज किया तुम लोग ऐसे पेपर शो कर सकते हो क्या आर्टवर्क का?